Hello, so welcome to this another video, second lecture. So here basically I'm going to solve the rest of the questions for CSIR-NET December 2025 for physics part. Okay, so this is another question from part B, and this question was asked from that EMT, electromagnetic theory. Right. So this question में क्या इस question में पूछा है ये solid sphere having radius r and uniform charge density rho. That from that sphere a small spherical volume, so having radius r by 4 is scooped up out from that sphere. Okay, so you have to find out the electric field at point x. X means इस point में find करना है. तो इस फिगर को हम रीड्रॉ करते हैं तो इट मीन्स अंदर एक जो r/4 रेडियस का जो स्फीयर है वो इट इज बेसिकली जस्ट लाइक ए कैविटी, राइट? सो हाउ टू क्रिएट ए कैविटी फ्रॉम ए बिगर स्फीयर? सो इस फिगर को हम रीड्रॉ करते हैं. सो सपोज यू हैव दैट स्फीयर हैविंग रेडियस r, राइट? तो इनका चार्ज डेंसिटी है रो. थ्रू आउट द वॉल्यूम इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? सो नाउ हाउ टू क्रिएट ए कैविटी इनसाइड दिस स्फीयर, राइट? तो क्या हम if I take that a small sphere having radius r/4, but if I take the charge density is minus rho throughout this volume, right? Then if I add this to sphere, or if I insert that small sphere into the bigger sphere, so then one cavity will form, right? Because that positive charge density for bigger sphere and negative charge density will be neutralized, so a cavity will be formed, right? So इस फिगर को हम अगर as a sum of two figure ले सकते हैं. Now it will be very easy to solve this problem. We know that the electric for a charge distribution, right? If rho is the charge distribution, then inside the cavity, inside a that a sphere, that what is the electric field? Rho r divided by 3 epsilon naught. So these things we know, where this r is the distance from the center of that spherical volume. सो ये बेसिकली हम बोलेंगे ये एक स्फीयर है, बिगर स्फीयर, और ये एक है कैविटी. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट स्फीयर अभी कितना होगा? सो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, सो इट इज नथिंग बट एंड एट व्हाट पॉइंट? एक्स पॉइंट. तो ये जो एक्स पॉइंट है फ्रॉम सेंटर टू एक्स पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है. बिकॉज आर यहाँ पर कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर टू? टोटल इज आर, राइट? द रेडियस इज आर. तो ये इट विल r/2 है सेंटर तो कैविटी का, देन यहाँ तक r/4 है, बिकॉज 1 r/4, 2 r/4, 3 r/4, देन 4 r/4, इट मीन्स 4r. so 3 r/4 is the distance from the center, so it is rho into, so 3 r/4 divided by 3 epsilon naught. और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कैविटी कितना होगा? एंड एक्स पॉइंट यू सी कैविटी का ऑन द सरफेस है, सो कैविटी का रेडियस का बराबर होगा कैविटी का सेंटर से. इट इज नथिंग बट रो माइनस रो, इट इज r/4 देन डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का समेशन, ई स्फीयर प्लस दैट ई दैट कैविटी, राइट? ई कैविटी. सो इज इक्वल टू कितना होगा? रो जो हियर इट इज रो then rho r divided by, if I take common that 3 epsilon naught into 4 common लेते हैं, so here it will be that 3r minus again that rho r 3 into 4 epsilon naught लेंगे तो here r already common ले चुका है हमने, so it will be 3 only, then here I will get 1 only, right? सो इन दोनों को क्या होगा कि रो आर डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, सो 2 ये 6 टाइम्स आएगा, सो इट इज नथिंग बट रो आर डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आर वेक्टर, राइट? टुवर्ड्स आर वेक्टर, सो आर कैप.
So which option will be correct option now here? So rho r by 6 epsilon naught, so it is second. Okay, so ये एक तरीका होता है, एक टेक्निक होता है कैविटी, हाउ विल फॉर्म ए कैविटी। एक जितना चार्ज पॉजिटिव होगा डेंसिटी, उसमें अगर निगेटिव अगर इंसर्ट करेंगे देन इट विल फॉर्म ए कैविटी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम दैट क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट इज गिवन दैट टू isolated electron quantum state, right? Their angular momentum number is L and spin is suppose S, total spin is S. What are the allowed values of L and S? तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट हम पहले ये ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गिवन है तो इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ए फार्मियन, ये हमको पता है। अगर फार्मियन है इट विल फॉलो दैट पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, राइट? पाउली प्रिंसिपल that we know. Now यहाँ पर हम देखेंगे कि फार्मियन और पाउली प्रिंसिपल का जो टोटल वेव फंक्शन है वो कैसे होगा। तो एक तो होगा रिलेटेड टू दैट वेव फंक्शन, एक स्पेशियल वेव फंक्शन रिलेटेड टू दैट एंगुलर मोमेंटम, एंड इनटू दैट अनदर वेव फंक्शन है वो रिलेटेड टू स्पिन, राइट? तो पाउलिस एक्सक्लूड फार्मियन के लिए दैट दिस should be the antisymmetric, right? Antisymmetric, right? ये हमको मालूम है। So now इसको antisymmetric बनने के लिए तो क्या होना पड़ेगा? So psi will be that antisymmetric when that psi spatial is symmetric, SYS in symmetry, और psi spin should be that anti SYS symmetric। ये पॉसिबल हो सकता है, और ये हो सकता है कि psi spatial ये मे भी एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, into that psi spin will be that symmetric, right? ये दो पॉसिबिलिटीज है फॉर दैट टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक। नाउ हमको देखना है कि एंटीसिमेट्रिक एस का किसके लिए होगा, क्या वैल्यू होना पड़ेगा, और सिमेट्रिक एस का क्या वैल्यू होना पड़ेगा। वी नो दैट व्हेन आई से दैट एल इज एस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इट्स अ ट्रिपलेट स्टेट एंड this is triplet state means it is related to that symmetric. When I say that S is equal to 0, that we know that it is singlet, so it will be antisymmetric, so अभी L का लिए देखते हैं तो ये स्पिन पार्ट का है ना, स्पिन, और अभी देखते हैं स्पेशल पार्ट के लिए। सो व्हेन L इज इक्वल टू जब इवन होगा तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है, अगर L इज इक्वल टू कितना होगा, ऑड होगा, तो दैट विल बी योर एंटीसिमेट्रिक L। सो दिस इज L इज इक्वल टू ऑड एंटी SYS सिमेट्रिक। सो अब हमको फाइंड करना है कि क्या क्या अलाउड वैल्यू होगा। सो इफ आई टेक दैट L वैल्यू अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मीन्स स्पेशल सिमेट्रिक मीन्स हम क्या लेंगे कि यहाँ पर इवन और यहाँ पर S इवन वैल्यू L और स्पिन एंटीसिमेट्रिक मीन्स S इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा, राइट? ये पॉसिबल हो सकता है। नाउ वो जब इवन लेंगे हमको देखना है कि L इवन होगा, S 0 कहाँ पर है, तो वो देखना है कि S0 और L इवन, S0 कहाँ पर है, ये S0 है बट L 1 है, सो दिस इज नॉट ए इवन नंबर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट? अब अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, स्पेशियल एंटीसिमेट्रिक, दैट मीन्स L इज इक्वल टू ऑड हो सकता है, और स्पिन सिमेट्रिक, दैट मीन्स S इज इक्वल टू सिमेट्रिक कब मिलता है, जब S इज इक्वल टू 1 होता है। सो S इज इक्वल टू 1 और
that L इज इक्वल टू ऑड कब होगा, तो S इज इक्वल टू 1 कहाँ पर है और L ऑड, S इज इक्वल टू 1 इधर है, राइट, L 0, तो 0 तो ऑड नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा, तो S इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 1, so this is odd number, right? So this will be a correct option. Another S is equal to 1 है but L is equal to की even है, तो ये नहीं होगा, so this is not possible. So यहाँ पर option 3 is the correct option. So let's proceed to the next question. So इस क्वेश्चन में पूछा गया कि BCF are 3 systems, right? उसमें सेम मास गिवन है and same number density kept at some same low temperature. Okay, C represents that classical, C represents your classical gas, right, and F represents your that Fermi gas, and your B represents your Bose gas. So what will be the pressure for this 3 type of gases? As you know that the fermions, it followed that Pauli principle, right? Because of this Pauli's principle, it has highest pressure, so PC will be highest. Okay, sorry, not PC, PF. This is PF, highest pressure. Now classical का प्रेशर कितना है, हम देखते हैं क्लासिकल का प्रेशर इज PC इज इक्वल टू NKBT, दिस इज द प्रेशर. और बोस गैस के लिए इट हैज lesser pressure as compared to that classical one, because so bosons are basically bound together, right? ये बाउंस टुगेदर, तो इनका प्रेशर क्या होगा, लोएस्ट होगा, सो PB लोएस्ट. ओके, इवन इसका प्रेशर किसका, क्लासिकल से भी कम है. सो हमारा हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट PF, और लोएस्ट कौन सा है, दैट PB. तो और बीज में क्या आएगा, देन PC. सो PF इज ग्रेटर देन PC is greater than PB. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड. ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड फ्रॉम EMT, and here it is given that a circular dish of radius R is made of 2 halves. One is that left half, another is right half. And left half the surface charge density is minus sigma, and right half the surface charge density is plus sigma. So the dipole moment of the disc find करना है. So we know that if I consider for discrete charge, dipole moment is summation QRI, राइट. तो ये है हमारा डिस्क्रीट चार्ज के लिए डाइपोल मोमेंट. इफ आई कंसीडर दैट अबाउट y एक्सिस, राइट, इफ आई कंसीडर, और y एक्सिस में एक डाइलेक्ट्रिक गिवन है एंड दैट इज नेग्लिजिबल थिकनेस. ओके, so and this right half and left half is separated by the dielectric. So if I consider that for each charge, because QRI है ना, Q into RI, that means Q into उस Q का position from the axis, Y axis से position कितना होगा वो देखना है, right? So if I consider any one charge here in the left side, right, then similarly that उसका चार्ज जितना होगा माइनस, क्योंकि माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, जितना चार्ज होगा माइनस में होगा. Just to opposite side, I will get the similar charge. At positive. So
दैट मीन्स यहाँ पर जितना डाइपोल मोमेंट इफ आई कंसीडर इन लेफ्ट साइड जितना चार्ज होगा, मान लो कि दैट Q1 इंटू सपोज R1 जितना डिस्टेंस है, सो वो माइनस में आ जाएगा, माइनस Q1 इंटू R1। तो इन पॉजिटिव साइड में क्या होगा, सिमिलरली दैट Q1 प्लस Q1 इंटू R1 उतना ही डिस्टेंस में हो जाएगा। So if I sum up, you will get 0, is not it? Similarly, यहाँ पर जितना point corresponding to each left point, I will get a right point, right charge. Corresponding to each left charge, I will get a right charge, right? So that the dipole moment कितना होगा? If I add the total dipole moment, it will be 0. That means with respect to the py, the dipole moment I will get 0, right? So now you have to consider for x axis, but x axis के लिए so dipole moment again ये discrete charge का है, but ये जो charge है ये discrete charge नहीं है, so it's a continuous charge distribution. So the dipole moment we know again that for continuous charge distribution, dipole moment P is equal to, it's nothing but R into dq. That means discrete charge के लिए Q into R और summation जब continuous हो जाएगा उस summation will transform to that integration, right? So now that integration R dq का मतलब क्या है? If I consider suppose a small area, elemental area dA, suppose about x-axis a small area dA, कहीं पर भी suppose this is area elemental area dA, ये suppose dA, right? So what will be the charge then? उसमें चार्ज कितना आ जाएगा into sigma into dA, because charge density is nothing but that sigma, तो इसके लिए कितना आएगा sigma into dA, right? So now if this is sigma into dA, then since left side is negative and right side is positive, right? So left side is negative, so हम लिखते हैं, and since left half is negative and right half is positive, okay? तो इस बार हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हाफ निगेटिव एंड राइट हाफ पॉजिटिव है, सो जो P होगा देन P विल बी, सो व्हाट आई विल गेट दैट 2 ऑफ दैट, बिकॉज दोनों का कंटिन्यूअस इस बार तो समेशन नहीं है ना, इस बार इंटीग्रेशन है, एंड दोनों का सम अप करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, सो आई विल गेट दैट 2 ऑफ दिस, right? That 2 sigma and that charge उस charge का x axis से, let us say it is x axis, x axis से x distance दूरी है, so it is x into dA, it will be x into dA, जहाँ पर ये r था तो r के जगह what I will write that x, okay, x into dA. Now if I use that polar coordinates, तो ये polar coordinates, so using that polar coordinates, spherical polar coordinates, that x is equal to is nothing but r into cos theta, okay? So this will be your, therefore what I will get, that dA is nothing but that r then dr and r dr and cos theta d theta. So if I put this value, it will be 2 sigma x के जगह what I will put, that x के जगह already r एक है, तो it will be r square then dr then cos theta then d theta, and integration को what will be the limit? Now the limit spherical polar coordinates का limit थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, जब माइनस यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा,
from it will be a minus pi by 2 upper side. Suppose if I say that upper side, so your theta will be minus pi by 2 less than equal to theta less than equal to pi by 2, right? And r का कब होगा? r is 0 से capital R तक, so it will be minus pi by 2 to sorry, so this will be your 0 to r, then it is minus pi by 2 to plus pi by 2, right? Plus pi by 2. So if I find this value, what I will get? So I will get 2 sigma into r cube by 3, और ये वाला जो factor है, what I will get? I will get a 2, right? So it is means 4 by 3 sigma r cube. So what I will get? This 4 by 3 sigma r cube. So this is nothing but your py, also dipole moment with respect px with respect to px. So px is equal to 4 by 3 sigma r cube and py is equal to 0. Where py is equal to 0? First you have to see that py is equal to 0 here. That means 1 and 2 option will not be the correct option. So when py 2 option में 0 है, एक 1/3 pi r cube, or we have got again 4 by 3 pi sigma r cube. So 4 will be the correct option. So let's proceed to the next question. So this is another question. तो ये question again क्या पूछा है? A classical monoatomic ideal gas in thermal equilibrium at temperature T. The velocity of the gas molecule is given this, right? So you have to find out that ensemble average. So what is given actually, that V is equal to, you know, that Vx x cap, then Vy, then y cap, then Vz, then z cap, right? So you have to find that Vx is squared and Vy is squared, right? The ensemble average. So इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, बट वी नो दैट ये इसको करने का बहुत इजी तरीका है. सो हम जानते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, राइट, आइडियल गैस मोलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0 होता है. सो दैट एनर्जी विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी. सो दैट हाफ ऑफ m Vx squared, right? And that is equal to, in thermal equilibrium, thermodynamics में, that is equal to half of kb into t. This is so in both sides से अगर आप करेंगे तो what I will get, that Vx square is equal to, it's nothing but kbt by m, kbt by m, right? तो ये हो गया. Similarly Vy square कितना हो जाएगा? Similarly तो Vy भी उतना ही हो जाएगा. You can easily say that kbt by m. But अब देखो, now that Vx and Vy both are independent, right? So both are independent. अगर independent है, so what I can write, that Vx square into then expectation of Vy square. So what I am, kbt by m into kbt by m. So that means, so what I will get, that kbt by m whole square, kbt by m whole square. So this is the answer. So which option is matching here? Second option. Let's proceed to the next question. Okay, so ये भी एक क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. यहाँ पर बेसिकली they are asking about that आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन हमारा गिवन है. तो हैमिल्टोनियन क्या गिवन है? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एस एंड बी, और बी इज नथिंग बट इट इज गिवन एज that minus of a, then s s को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? तो s I can write that, suppose s x, right, x cap, then s y, then y cap. तो b is equal to कितना है? bx x cap by y. So s dot b को हम कैसे लिखेंगे? So what I can write sx then bx then plus sy then by dot product करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, right? Now
दैट यहाँ पर गिवन है कि स्पिन हाफ पार्टिकल, सो फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल, so for half spin particle we know that S is equal to A squared by 2 into sigma, where this sigma is nothing but the Pauli's matrices, right? So this S का value हम अगर यहाँ पर put कर देंगे तो what I will get, so I will get minus A into, right, minus A into, तो इसको मैं A squared divided by 2, so I can easily write that bx into sigma x, right? So then plus then by into then sigma y, so I can easily write down. So now that sigma and this इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. So bx इसका आइगन वैल्यू कितना होगा, so क्योंकि ये मैट्रिक्स है सिग्मा x and sigma y द Pauli's matrices, so bx, let us find that sigma, the matrix, so eigenvalue of this matrix. So this sigma x we know that 0 1 then 1 0, then by then sigma y का वैल्यू है 0 minus I then 0. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, so what I will get, so I will get that 0 0 then पहला एलिमेंट 0 0 0 हो जाएगा, देन उसके बाद कितना हो जाएगा, एक होगा bx इधर से और माइनस आई बी वाई, ये एक होगा. सिमिलरली यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा ये bx हो जाएगा, देन प्लस आई बी वाई, और ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा 0. तो ये हो गया. नाउ इसका आइगन वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, जैसे कि आइगन वैल्यू फाइंड करने का a माइनस लैम्डा आई है और इसका डिटर्मिनेंट 0 है, ये हम लेते हैं. तो ये लेटर से अगर a इज इक्वल टू इतना है तो इसका माइनस लैम्डा ओनली डायगोनल एलिमेंट में आ जाएगा, सो उसका होगा माइनस लैम्डा देन bx माइनस आई बी वाई, then यहाँ पर then bx plus iby, then it will be again minus lambda and this is equal to 0. तो अगर ये 0 है, so what I can easily write down then, so lambda square is equal to lambda square what I can is equal to then एक होगा कि और ये bx minus iby bx plus iby, तो what I will get that bx square then by square. So your lambda will be plus minus of under root of bx square plus by square. तो ये आइगन वैल्यू है, तो उतना ही आइगन वैल्यू, क्योंकि हैमिल्टनियन का आइगन वैल्यू इस हैमिल्टनियन का आइगन वैल्यू निकलना है और बाकी ये तो कांस्टेंट है, तो इतना आइगन वैल्यू के साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स उसका आइगन वैल्यू फर्दर कितना हो जाएगा, इसके साथ माइनस ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, देन वो एक माइनस और प्लस माइनस, सो इट विल बी योर प्लस माइनस, देन it will be just like of bx square plus by square. So this is the answer. So which option is matching here? This option third. Okay, so this is a very simple question, just वहाँ पर Pauli's matrix को include करना है और उसका आइगन वैल्यू निकालना है. तो let's proceed the next question. अच्छा, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये अगेन किससे मैथमेटिकल फिजिक्स का है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रेसिडियो फाइंड करना है एट z इजिकल टू 1. सो हमारा एफ z इजिकल टू जितना गिवन है उसको हम क्या इस तरीके से लिख सकता है, cos of pi into z divided by 1 minus z square को हम क्या लिखेंगे 1 plus z into then 1 minus z, right, and ये whole cube and ये भी whole cube. So if I put that denominator equate to, अगर denominator if I put equate to 0 तो 1 plus z into whole cube then 1 minus z into whole cube. सो योर z इज इक्वल टू की कितना होगा, प्लस 1 होगा एक बार और माइनस 1 होगा एक बार,
और इन दोनों का 3 टाइम्स होगा, राइट। -1 एक बार होगा, +1 एक बार। सो हालांकि रेसिडियो कहाँ पर फाइंड करना है, 1 पर फाइंड करना है। तो जो 1 पर फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू 1, बट z इज इक्वल टू 1 में अगेन न्यूमरेटर नॉन जीरो, राइट, दैट न्यूमरेटर इज नॉन जीरो। अगर ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर जीरो न्यूमरेटर नॉन जीरो, तो वो पोल सिंगुलरिटी कहा जाता है। सो दैट मीन्स z इज इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 3। सो ऑर्डर 3। सो इस पॉइंट में अगर ऑर्डर 3, तो हम रेसिडियो निकालना पड़ेगा। सो दैट रेसिडियो अगेन अगर ऑर्डर 3 है, रेसिडियो इट्स नथिंग बट ये है। सो z टेंस टू 1, राइट, z टेंस टू 1। सो f ऑफ z इज इक्वल टू नथिंग बट सिंस ऑर्डर 3, तो हम क्या जानते हैं कि वो n ऑर्डर के लिए n-1 ये फॉर्मूला है। सो लेट अस से दैट n-1, लेट अस राइट द फॉर्मूला, factorial, then limit, then z tends to 1, then it is d of n-1 divided by dz to the power n-1, then z minus 1 whole to the power n into f of z। इतना ही है। तो यहाँ पर ऑर्डर n इज द ऑर्डर, राइट, ऑर्डर ऑफ पोल। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 है। सो इट इज 1 minus 2, इट्स 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है। सो लिमिट z टेंस टू 1, सो इट मीन्स d स्क्वायर डिवाइडेड बाई dz स्क्वायर। तो यहाँ पर z minus 1 होल स्क्वायर, z minus 1 होल स्क्वायर इंटू f ऑफ z, है ना, z minus 1 होल स्क्वायर इंटू f होल क्यूब, नॉट होल स्क्वायर, होल क्यूब इंटू f ऑफ z। सो यहाँ पर एक टर्म आ जाएगा, that is, you know, that 1 by 2, then limit z tends to 1, then d by dz square। so z minus 1 को मैं 1 minus z लिख सकता हूँ होल क्यूब, बट यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा इंस्टेंटली। सो देन f of z, since f of z is cos of pi z divided by 1 plus z, then होल क्यूब, देन 1 minus z होल क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। so it is nothing but minus of half limit z tends to 1। so d2 by dz square, then इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cos of pi z divided by 1 plus z whole cube, right। so that means 2 times you have to differentiate this, 2 times differentiate करना पड़ेगा। so अगर 2 times इसको differentiate करेंगे, so what I will get that, मैं थोड़ा सा इधर इधर लिखता हूँ, ओके, एक स्टेप इधर लिखता हूँ। सो एक माइनस हाफ है, देन माइनस हाफ, अच्छा 2 टाइम्स। सो मैं ये वाला जो 2 टाइम्स है मैं इधर लिखता हूँ। सो लेट अस राइट हियर 2 टाइम्स, तो d2 divided by dz square, then cos of pi z into then 1 plus z whole cube। सो अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी जेड हो जाएगा, और 1 प्लस जेड इट विल बी होल क्यूब, देन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6, राइट। देन 1 प्लस जेड होल क्यूब, तो इंटू कॉस ऑफ पाई जेड इंटू, ये डिवीजन फॉर्म में है ना, कॉस ऑफ पाई जेड का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन ऑफ पाई जेड, बट एक माइनस पाई आ जाएगा यहाँ पर, राइट। देन माइनस क्या होगा, देन कॉस ऑफ पाई जेड, देन डिनोमिनेटर का 1 प्लस जेड होल क्यूब का इतना कितना होगा 1, 3 इंटू 1 प्लस जेड होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन इजीली से दैट अगेन कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस जेड स्क्वायर एक है यहाँ पर, 1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से भी एक 1 प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे, देन वो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट, देन माइनस ऑफ पाई, देन
यहाँ पर 1 प्लस जेड आ जाएगा, देन साइन ऑफ पाई जेड, राइट, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई जेड, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई जेड, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड होल टू द पावर 4। ओके, सो 1 प्लस जेड होल टू द पावर 4। नाउ इस बार इसको एक काम करते हैं, इसको दोबारा डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड करेंगे तो माइनस पाई और अगेन ये साइन ऑफ पाई जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड होल क्यूब, देन माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, एक 3 इधर है, 3 कॉस ऑफ पाई जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड होल टू द पावर 4, और इसका भी डी बाई डी जेड निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसका अगर डी बाई डी जेड निकालेंगे तो जस्ट इफ आई पुट दिस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, एक माइनस पाई है तो अगेन यहाँ का 1 प्लस जेड, देन इट विल बी 6 हो जाएगा, देन 1 प्लस जेड, देन होल क्यूब, देन साइन पाई जेड का होगा कॉस ऑफ पाई जेड, राइट, और एक पाई आ जाएगा तो यहाँ पर पाई स्क्वायर है, देन माइनस, एक माइनस आ जाएगा, देन माइनस ये होगा आपका तो एक पाई आ जाएगा, देन साइन ऑफ पाई जेड, देन 3 इंटू 1 प्लस जेड होल स्क्वायर, ये एक टर्म हो जाएगा। देन सेकेंड टर्म जो है इसका मैं इधर लिखता हूँ, हियर आई कैन से दैट 1 प्लस जेड होल टू द पावर आई थिंक 8, yes, whole to the power 8, then 1 plus z whole to the power 4 into 3 cos of pi z का 3 sin pi z, देन यहाँ पर एक माइनस पाई आ जाएगा, देन माइनस कितना होगा, माइनस होगा 3 cos of pi z into then 4 into 1 plus z whole cube। so ये just you can see the differentiation। so differentiate करने के बाद just you have to put z is equal to 1। ये सारे के सारे वैल्यू में अगर if we put z is equal to 1 तो हमको कितना मिलेगा, so that means here also I have to put z is equal to 1, here also I have to put z is equal to 1। अगर पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट, यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, but I am giving you that hints। so if I put z is equal to 1, what I will get, so I will get ऐसा मिलेगा हमको that 3 minus pi square divided by 60, right। so this will be the answer। so option 4 will be the correct option। okay, so let's proceed to the next class। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, so I hope that you will be able to solve it। just put the z is equal to 1, then you will see। और हमेशा यहाँ पर देखना कि जहाँ पर साइन है z is equal to 1 पुट करेंगे तो वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। बेसिकली ये यहाँ पर ये जो टर्म है ये साइन टर्म है, ये 0 हो जाएगा, और ये भी साइन टर्म है, दिखने में बड़ा है लेकिन ये 0 हो जाएगा बिकॉज साइन 180 डिग्री, साइन इन 180 डिग्री का वैल्यू इज 0, राइट। सो ओनली इस वाला टर्म से एक आ जाएगा और इस वाला टर्म से एक आ जाएगा। सो देन यू कैन इजीली पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये हमारा मेरा एक फिजिसिस्ट एकेडमी एक इंस्टीट्यूट है, तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन है। So this time I am taking both online and offline both class, offline classes venue Guwahati, then Assam, Guwahati, Hatigao, Assam। So these are the details। if anyone interested
to join, then can contact me here, right? Here basically we provide CSIR-NET exam, guidance for GATE exam, GEST exam, TFR, BRC, then DRDO, ISRO, Northeast Slate. These are for after postgraduate student. Then for IIT JAM examination, for master's admission, that for undergraduate student IIT JAM के बारे में भी हम गाइडेंस करते हैं. So if you are interested, then directly can contact me in this number. So thank you. So next video में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So keep watching for the next possible solutions. Thank you.